Yes, sir, you are. Yes. Okay. Fine. Now, in this case, the metal is not under the influence of any ligand. But as the ligand approaches, and crystal field theory says that the ligand, it approached from a spherical symmetry. That means they are symmetrical in nature and they're approaching as a sphere, first of all. क्या मतलब है इसका? They're approaching very far away. They're approaching from a very far away place. And crystal field theory, it assumes that the metal is a positive ion and the ligand is a negative anion, or it is a dipole that is having negative end and positive end. And this negative end is directed towards the metal atom. Okay, so it is talking about how the bonds are being formed. So it says that when the ligand starts to approach the metal, so they are approaching the metal because the metal has a nucleus which is positively charged. Okay, they are approaching the metal atom. But outside the positive charge, we have negatively charged electrons which are in the d orbitals, the valence shell electrons. Now those electrons will be repelled by the ligand and their energy is going to increase. Okay, so what is happening? First of all, the energy is increasing, and this is inside a symmetrical field. Symmetrical field of ligands. Okay, so as you know, when electrons and when negative and negative, they will come near to each other, then what is going to happen? Their energy will increase. But as the ligands approaches more closely and it becomes more nearer to the metal atom, the metal sees that it is not approaching all the d orbitals. It is only approaching some specific d orbitals. And in this case, we are looking for ML6. That means the ligand is 6. So it will be approaching in an octahedral field. It will be making an octahedral geometry, and that is why it will be in an octahedral field, and it will split into two different sets. One is known as the EG set, and the other is known as the T2G set. Now, since it is approaching from the octahedral field, this octahedral field, it will be approaching from the axis of the coordinates. It will be approaching from x-axis, y-axis, and z-axis. In the x-axis, we have two different lines, positive or negative wala. So two ligands approaching from there, to y and to z. And that is why the dz square and dxy, x square minus y square, which are on the axis, their energy increases furthermore. And the orbitals which are not on the axis, that is dxy, dyz, and dxz, since they are not approached by the ligands directly, they are not in the direction of the ligands, their energy will decrease. Their energy will decrease, and EG की energy क्या हो जाएगी? Increase कर जाएगी. This line that is symmetrical field में जहाँ पे जो energy थी, this line is known as the Berry center. And Berry center से जो ऊपर है, that are the EG orbitals. We have two EG orbitals. And Berry center से जो नीचे है, that is T2G orbital. Okay. Now this whole thing is what? This is known as octahedral splitting, which is given by del O. It is given by what? Del O. Now, about the EG level, it is T by 5 del O above the Berry center, and the T2G is 2 by 5 del O below the Berry center. Okay, so from here to here we have 2 by 5, and above we have 3 by 5 del O. Okay, so this is about crystal field theory. Now, many things, whether the electrons that we are adding in the d subshell, it is going to get paired or it is not going to get paired, it depends on del O. And the major factor which determines the del O is the spectrochemical series, which is this series. In here, what we have I negative, then Br negative, and as we are going from I negative to carbonyl, the del O will increase, the ligand's field strength increases. So if I say we have a strong field ligand, then strong field ligand will be applying more repulsion and as well as more attraction also. It will be attracted towards the nucleus more effectively. And so if it is attracted towards the nucleus more effectively, it will be repelled by the electrons more effectively. Okay? So both of these things happen. Increase in EG and decrease in T2G happens, and that is why del O increases. So spectrochemical series, here you can remember it like this. एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सिलेट का पानी से प्यार. एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सिलेट का पानी से प्यार. नाचते हुए उड़ता अमोनिया in North Canada and Colombo में मिला. In North Canada and Colombo में मिला. So write it. I hope you have written it. I've shown you this in the previous class also. You can slightly remember this spectrochemical series as CNOx. कैसे याद कर सकते हैं इसको? CNOx की तरह याद सकते हैं. As you can see here, we have carbon donors, then we have nitrogen donors, then oxygen donors, and then halogen donors. तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं CNOx. Now,
I hope all of you have written this, na? Yes or no, please tell me. Yes, Yes, sir. Hiba. Yes, okay. Now let us look at the questions. Tell me, what is the correct answer? Look at the spectrochemical series. You can answer it using this only. Na? What will be the answer? D will be the correct answer. No? Cn negative, then C2O4 negative, then F negative, then SCN negative. Please write this down. Assalamu alaikum, Aksa. You are again late. Why are you late, Aksa? The class starts at 2:15, no? Yeah, I think, yeah. 2:15 p.m. KSA time. I hope all of you are done. Now let us see. First of all, here we have shown the spectrochemical series. Now, after spectrochemical series, you have to know what is a strong field ligand and which ligand will be acting as strong field ligand and which ligand will be acting as weak field ligand. Okay? Now, I'm going to give you first of all for ML6, that is when you have 6 ligands. If you have 6 ligands and the metal is of 3D series, 3D series में कौन कौन से आ सकते हैं? शक्ति, विक्रमन, फेको, निकोजन. Okay, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. All of these are 3D series elements. Now, if you have 3D series elements and you have metal in +2 state, then only carbon donors are going to be strong field ligand. Only carbon donors, that means Cn negative and CO will be strong field ligand. When you have metal in +3 state, then in that case, carbon and nitrogen donors, both of them will be acting as strong field ligand. If you have the metal of 3D series in +4 oxidation state, I hope all of you know how to calculate and determine the oxidation state. All the ligands will be strong field ligand. All the ligands will act as strong field ligand. One important point to remember is that when if you have cobalt 3 positive, then in cobalt 3 positive, oxygen donors will also act as strong field ligand with nitrogen and carbon donors. Nitrogen and carbon donors सही, लेकिन cobalt +3 के state में इसको प्लीज याद रखिएगा. But oxygen donors will also act as strong field ligand. Now, when you have 4D and 5D series metal, then all the ligand will act as strong field ligand. So strong field ligand और weak field ligand में आप लोग को पता चल गया होगा. There are a few things. सबसे पहले तो ligands पे ये depend करता है, and it is upon the spectrochemical series. Second is the series. Whether it is 3D series or 4D series and 5D series. Why the series matters? Series matters because series determine the radius and the size of the metal, and it also determines how many protons is present in that particular metal atom. If you have 3D series, then obviously उसमें कम protons होंगे तो कम positive charge. If there is less positive charge, then the ligand will not approach as fastly and it will not approach in that extent. If you increase the number of protons in 4D and 5D series, what happens? The number of protons increases, atomic number increases, so proton number increases. And that is why those metal atoms can easily attract the ligands and they can form a bond, and that is why the del O, octahedral field splitting energy, is what? Very high. And the third thing is that charge.
Obviously, if you have more charge, then the splitting will be more. Okay? If you have more charge, then the splitting will be more. So these are the three things that it depends on. There's one more thing, that is fourth thing, that is the geometry. And for geometry, you can remember del O is greater than del T. Del T क्या है? This is for tetrahedral, del O is for octahedral. Octahedral में why? Because octahedral में 6 ligands होते हैं हमारे पास. So 6 ligands will be approaching the metal atom. तो ज़्यादा वहाँ पे extent of overlapping होगा, and there will be greater extent of splitting. In del T we have only 4 ligands. That is why the extent of splitting is less. Please write this down. Let me know once you're done. Okay, so these are the 3D elements. उसको आप याद कर लीजिएगा. You can remember it like this: शक्ति, विक्रमण, फेको, निकुंजन. शक्ति, विक्रमण, फेको, निकुंजन. I hope everyone is done writing this. Okay. Let us see this question. I will do this for 1 minute. Okay. Sir, please let me know once you're done. Staff, let me know once you're done. Yes, sir, done. अभी इतना लेट आ रहे हैं बच्चे, बताइए कैसे काम चलेगा. अस्सलाम वालेकुम हनीफा, हाउ आर यू? हनीफा, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे इसको लिखिए. Please write this down fast. And also, Hanifa, you have written the spectrochemical series, ना? Yes, sir. ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से, फिर सवाल करेंगे. Why are you late? I Uh, hope all I of was you. You're no, still. Why are you late? That's not an answer. आप class है तो class करना. Why were you? I was not at home. ठीक है, you are not at home. This is for everyone, by the way. Those who come late, you should be at home ना जब time है class का. Right, Hanifa? Yeah, it wasn't planned. It wasn't planned. Hanifa, you will let me know once you're done writing this, okay? Let me also explain this. I have to see what is a strong field ligand when we have ML6. That means in octahedral geometry, when we have 6 ligands, in that case, if you want to identify whether the ligand is strong field or not, then you will look whether the element it belongs to 3D series. If it belongs to 3D series, then you will look at the oxidation state of the metal. If the metal is +2 state, then only the carbon donors, that is CN and CO, will be strong field ligand. If the metal is in +3 state, then carbon and nitrogen, both of the donors will be strong field. So you देखिए, these are the nitrogen donors, these are carbon donors. Okay. Next we have metal in +4 state, all the ligands will act as strong field ligand. Now, an exception in this case is for cobalt 3 positive. If cobalt 3 positive is present, then oxygen donors will also act as what? As a strong field ligand. In 4D and 5D series, all ligands will act as strong field ligand. So I will tell you how you have to approach any question. You will first of all look at the series. Okay? You will see whether it is 3D or 4D or 5D. If you have 3D, then you will see whether it is +2, +3 or it is +4. अगर +4 हुआ तब तो all हो जाएगा. +2 में क्या होगा? +2 में you will have only carbon donors. +3 में आप देखिएगा if you have cobalt or other,
अगर कोबाल्ट है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, बोथ ऑफ ऑल ऑफ दीस थ्री विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अदर्स है तो सिर्फ कार्बन एंड नाइट्रोजन विल बी strong field ligand. I hope all of you have understood this. Hanifa, let me know once you're done writing this. Done. Done. Okay. Let's look at the first question. Pick out the correct statement with respect to MnC and 6,3 negative. So in this case, first of all, I will see Mn is what? 3D series. Then I will look at the charge on Mn. What will be the charge on Mn? Tell me. Mn पे क्या charge होगा? Oxidation state of Mn. Cn is -1 and here we have 3. +3 हो जाएगा ना? ठीक है? Got it, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. And obviously, if you have Cn, then it is obviously going to act as what? It is going to act as strong field ligand. Now we are going to look at the Mn. Mn is what? Mn is generally Mn is 25. 25 का मतलब क्या होता है? S2D5, right? Now we have Mn plus 3. Mn plus 3 will be 2 electron from S will go and 1 electron from D will go. So you have 4s0 and you have 3d4. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे खास तौर से देखिएगा. When you have 3d4, then in that case, what is going to happen? Tell me. You have 3d4. ठीक है. 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron. Now, since Cn is what it is going to be strong field ligand, pairing will happen. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कीजिएगा. प्लीज रिमेंबर, पेयरिंग इस तरह से होती है. When you have d4, then 1, 2, 3 and 4. ठीक है. तो d4 के केस में इस तरह से पेयरिंग होगी. Yes. So it will be what? D2 inner orbital, then S and the pp orbital. So it will be D2sp3 and it will be octahedral in shape. Okay. So the correct option is D2sp3 and octahedral. B is the correct option. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Try this. Cn है तो obviously it is going to be strong field ligand, है ना? और पेयरिंग होगी. And cobalt is here also +3. So it will be 4s0, 3d6. थ्री डी सिक्स है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए. 3d6 है. ठीक है. इफ यू हैव 3d6, 1, 2, 3, 4 and 5. अच्छा, 3d6 है तो what will happen? Pairing will happen. First of all, you will fill 3. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have what? 0 unpaired electrons. No unpaired electrons. And it will be what? It will be what? It will be low spin. है ना? Because we have 0 unpaired electron. So no unpaired electron. C is the correct option, not D. Some people were writing D, not D. It will be C. Got it, guys? Yes or no? Please tell me. Please let me know if you have any doubt. ठीक है? These are very easy questions. इसको कीजिए. What is the correct electronic configuration of the central atom in K4 FeCN6? फिर यहाँ पे देखिएगा Fe के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है. ठीक है. So you will see that Fe has a charge of +2. Here we have -6. Here we have +4. ठीक है. तो +4 में कितना ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा. +4 में मतलब we have to balance it ना. तो +4 और +2 6 हो गया और इधर -6. तो ओवरऑल चार्ज इज 0.
ठीक है, ध्यान रखिएगा बैलेंस करना रहता है if you have a neutral species. So we have +2 state. Fe +2 will be what? 26 होता है ना, तो it will be 4s0 and 3d6. ठीक है, and we have Cn. Now in that case, हाँ जी चलिए, yes, सैफ करेक्ट. 3d6 में बताइए क्या होगा? This is T2G, this is EG. चलिए, expecting answer from everyone now. Hanifa, yes, correct, very good. फरहत आपको समझ में आ रहा है? यस फरहत, फरहत आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, अक्सा, व्हाट अबाउट यू? यस सर. ओके, तो प्लीज आंसर कीजिए इसको. टेल मी अक्सा, पेयरिंग होगी या नहीं होगी? इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड और नॉट? पेड. हाँ, दे विल बी पेयर्ड. ठीक है. फरहत, आई कैन नॉट हियर यू, कैन यू प्लीज आंसर? एलन, व्हाट अबाउट यू? आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके फाइन, प्लीज आंसर दिस देन, है ना? यस, फरहत करेक्ट, एलन करेक्ट. अक्सा, आपका आंसर नहीं आया है. अक्सा, आपका आंसर नहीं आया है. ऑल्सो हिबा, यू हैव नॉट आंसर्ड. Aksa, please let me know if you're getting stuck, okay? Yes, Aksa, very good, correct. Hiba and Hanifa, आपका आंसर, हनीफा का आंसर आ चुका है, सॉरी हनीफा. हिबा, आपका आंसर नहीं आया है. हिबा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Seriously, it's very easy, है ना? CN6 है तो obviously there will be pairing because it's a strong field ligand. And 3d6, so 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, and 6 electron. So we have T2G6 and EG0. Now in this case, what I will write, B is the correct option. ठीक है. Now please remember we have T2G6 and EG0. और यहीं से हम समझेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं. ठीक है. So what is the formula? Please write this. हाँ हाँ जी जी, एक सेकंड. Yes, sir, tell me. In the previous question, can you say how the configuration was before the pairing? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड. अच्छा अच्छा. हाउ वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ओके सैफ, पैसे हम पहले हम लोग को क्या दिमाग में रखना है? वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स. ओके सैफ. Yes, sir. ठीक है. अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड दे आर हैविंग इक्वल एनर्जीज, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस 1 2 3, राइट? Yes, sir. है ना? और सब 4 5 6. ठीक है. Yes. Okay. This is after the pairing occurs, right? Before pairing, 2 electrons should be in EG level also, right? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है. आफ्टर पेयरिंग बिफोर पेयरिंग कुछ नहीं होता है. पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है. अंडरस्टूड सर? Okay, sir. ठीक है. आफ्टर और बिफोर नहीं होता. इफ यू हैव सीएन देन पेयरिंग विल हैपन इन द सेंस कि देखिए 2 चॉइसेस होते हैं. जब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू कैन हैव 1 2 and 3. नाउ द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैन आइदर गो टू द ईजी लेवल और इट कैन स्टे इन द T2G लेवल. ठीक है. तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन चूज? द इलेक्ट्रॉन विल चूज व्हाटएवर इज लोअर इन एनर्जी. सो दिस इज योर del O. ठीक है. वी हैव del O and then we have the pairing energy, because जब आप पेयर कीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स को, तब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा and that repulsion is costing some energy. ठीक है. So either it can gain energy like this or it can gain energy by pairing. In this case del O is greater. ठीक है. अगर आप अगर आप EG में इलेक्ट्रॉन को रखिएगा तो वहां पे ज्यादा एनर्जी उसके पास हो जाएगी. Now each and everything in the universe, it wants to be in the lowest energy state possible. That is why the electron chooses to be in the pairing state. और वो T2G में ही रहना चाहता है. It doesn't go to the EG level. ठीक है. So that is why we are going to pair it like this. Got it? Yes or no? Tell me, Saf. Yes, sir. Now, in this case,
if you have to calculate the crystal field splitting energy, then what you need to do, you have to remember this formula, minus 0.4 into T2G. Why minus sign? Because, okay, wait a second. This will not be minus, EG will be in positive, no? EG will be in positive. Okay. First of all, remember, minus 0.4 T2G plus 0.6 EG. Why minus 0.4 T2G? Because T2G is below the barycenter and EG is above the barycenter. So please write this equation. Okay, so if I want to calculate for T2G6 EG0, then what I will do, I will write T2G का मतलब क्या, number of electrons in T2G. So it will be equal to minus 0.4 into number of electrons in T2G is equal to 6 plus 0.6 into number of electrons in EG is equal to 0, and it will be del O. So this will be equal to 6 4s are 24. So you have 24, minus sign will be there. There will be a decimal point, and 0.6 into 0 will be equal to 0 is del O. Okay. So del O के केस में आएगा आपका इतना minus 2.4 del O in this case. Minus 0.4 into the number of electrons in T2G level plus 0.6 into the number of electrons in EG level, and the unit is del O. Please write this down. Let me know once you're done. Done, guys? जी, everyone done? ओहो यस नो भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल, इतनी शांति है. यस अक्सा, फरहत, हनीफा, हिबा डन. नहीं अक्सा, you're not done, still writing. Yes अक्सा. चलिए try this question. Which of the following complexes, the one which among the following complexes, the one which shows zero crystal field stabilization energy is equal to which one? They're asking CFSC किसमें zero होगा. CFSC will be equal to zero किस केस में होगा? पहले इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए. I'm going to give you guys 4 minutes. ठीक है, 1 minute for each of them. तब तक आपका आंसर आ जाएगा. And then I will let you know how to see whether it is having zero या कितना हो रहा है हमारे पास. Zero के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है, याद रखेंगे.
Okay, Maham. Okay, sir. We'll see. Yes, Saf and Alan, I think both of you are correct. Still waiting for others. Yes, perfect. Very good. Correct. Okay. Please see. देखिए एक सिंपल सा आप ट्रिक याद रखिएगा. CFSC is equal to 0. It can happen in a few cases. एक तो केस होगा जब आपके पास क्या हो D0. When you have 0 electrons in the d orbital. ठीक है, तब तो वहां पे CFSC 0 हो जाएगी. Next case is when you have D5 and you have a weak field ligand. क्या आपके पास weak field ligand है और आपके पास what is the configuration? Configuration is D5, 5 इलेक्ट्रॉन. And what else you can have if you have D10? जब D10 होगा तब भी आपके पास क्या होगा? The CFSC is and in that case will is also going to be 0. ठीक है, D10 strong field हो weak field हो उसको कोई मैटर नहीं करता. D5 में weak field ligand होना चाहिए. So first of all you will see whether you have D0 state or not. उसका D5 और उसका D10 के बारे में आप देख सकते हैं. So here Mn is in +3 state. है ना? Fe is also in +3 state. Cobalt is in +2 state. And here cobalt is in +3 state. ठीक है. Now none of the cases is a D0 state. अब आप क्या देखिएगा? D10 भी कोई नहीं. तो अब आपको क्या देखना सिर्फ और सिर्फ D5 कौन सा है weak field ligand में and all the H2Os are present. तो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे यहाँ पे weak field ligand. So in Mn +3 what do we have? S is equal to 0 and how many d electrons do we have? I have D4. ठीक है, 4s and 3d4. Third B के केस में देखिएगा तो this is going to be 4s0 and here we are going to have 3d. ठीक है, here we are going to have 3d5. कोबाल्ट के केस में अगर आप देखिएगा तो इट विल बी 4s0 and here will be having how many? शक्ति विक्रमन से 3d7 and इस केस में आपके पास 4s0 and here we will have 3d6. ठीक है, सिंपली अब आपको समझ में आ रहा होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन जहां पे आपके पास क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा. हम ये भी बता देते हैं क्यों होगा ये. इट इज बिकॉज you have 3d5. 3d5 में क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड में you have T2G3 and Eg will have 2 electrons. ठीक है, making 3 electrons. Now CFSC will be equal to minus 0.6 into 3 plus 0.4 into 2. तो माइनस 0. उल्टा लिख दिया हमने 0.4 होगा ये ना. This will be 0.4 into 3 and 0.6 into 2. Number of electrons in T2G, number of electrons in EG. So 4 3s are 12. So minus 1.2, 6 2s are 12. That is 1.2. So plus 1.2, 0 minus 0 1.2 will be equal to 0. ठीक है. CFSC 0 केस में इन तीनों को याद कर लीजिएगा. D0, D5 और D10 के केस में CFSC क्या होगी? 0 हो जाएगी. Moving on. Try this. The order of energy absorbed which is responsible for the color of complexes. एक बार इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को. When you have splitted d orbitals, please see here 1 2 1 2 and 3. When you have splitted d orbitals and if you have an electrons in the T2G orbital and here we have the EG orbital, if a light of suitable frequency or if let us suppose white light is hit on this complex, तो क्या होगा? Some of the frequency of white light will be absorbed by the electron and it will go above to the EG level. Now कितना energy absorb करेगा? That is completely dependent on del O. So energy absorbed is directly proportional to del O. ठीक है.
अच्छा, एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेलो, ये लिख सकते हैं, दैट मींस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेलो। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेलो, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द लैम्डा, वेवलेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेलो, है ना, बिकॉज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिलेशनशिप होता है। तो प्लीज राइट दिस डाउन, एंड एज सुन एज इट एब्जॉर्ब सम ऑफ देम, इट विल एमिट, नॉट एमिट रादर इट विल ट्रांसमिट, है ना, कुछ तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी बात इसने ट्रांसमिट कर दिया, एंड दिस ट्रांसमिटेड वन, whatever it has transmitted we see that as color, ठीक है, जो भी हमारे तरफ ट्रांसमिट होता है, it strikes the object absorbs some of the frequency and reflects back some of the frequency, उसी रिफ्लेक्शन को जो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करता है उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। सो इट ट्रांसमिट्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एंड दैट फ्रीक्वेंसी एज अ होल वी सी दैट एज अ कलर, ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा, जो ट्रांसमिट होता है। यहाँ ऐसा मत बोलिएगा कहीं पे भी पूछा जाए कलर कैसे आता है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो एक कलर आता है, उस वजह से एमिशन होता है, दैट इज नॉट कलर, ठीक है। तो कलर, अगर आपको समझना कलर और एमिशन में क्या फर्क है, तो बल्ब जो है आपके पास, लाइट बल्ब जो है, अगर आप बाकी सारे बल्ब को बंद करते हो और उसको ऑन रखें तभी वो क्या करेगा, इट विल बी एमिटिंग लाइट। बट इफ यू आर गोइंग टू, फॉर एग्जाम्पल अभी आप सारे रूम में जितने भी लाइट्स है सबको ऑफ कर लें, फिर भी आपका कंप्यूटर स्क्रीन है या फिर लैपटॉप का स्क्रीन है या फिर मोबाइल का स्क्रीन है, दैट इज स्टिल एमिटिंग सम रेज, तो दैट इज एमिशन। कलर क्या होता है, आपने लाइट बंद किया आपको कुछ कलर नहीं दिखेगा, यू कैन नॉट सी एनी कलर, सो दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन कलर एंड एमिशन। तो कलर जो है इट रिक्वायर्स व्हाइट लाइट, एमिशन इट डज नॉट रिक्वायर एनी लाइट, आप बाकी बत्तियों को बंद कर दे तब भी आपको वो एमिट करेगा, ठीक है। चलिए, आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन, नाउ डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज, डेलो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन सीएफएसई, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, लेकिन तो आपको क्या देखना पड़ेगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मूविंग ऑन, ट्राई दिस क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, है ना, तो उन्होंने क्या बोला है, एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। What are the ligands given? You have H2O and En. Here we have more H2O and some less En, and here we have 3. So जहां पे आपके पास when you have more strong field ligand, तो वहां पे आपके पास splitting ज्यादा हो। So tell me which is having stronger field, H2O या En? Which has more field? कौन strong field ligand है H2O और En में से? Is it H2O और En? Ethylene diamine. कौन सा strong field है? Please look at the spectrochemical series and tell me which is stronger. किसकी CFSE ज्यादा होती है? Which is greater, En और H2O? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो आप देखिए, तुरंत देखिए ना, बाकी इसको आप छोड़ दीजिए सवाल को, जो हम बोल रहे हैं उसको कीजिए। En is having more energy, ठीक है, तो जहां पे En ज्यादा होगा, मोर En का क्या मतलब हुआ, मोर डेलो, ठीक है, और मोर डेलो का क्या मतलब हुआ, मोर एनर्जी, है ना, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर, ज्यादा एनर्जी वाले फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे ज्यादा En कहाँ पे है, सी में है, एंड देन फॉलोड बाय ए, एंड देन फॉलोड बाय बी, तो सी ए बी आंसर कहाँ पे है आपके पास, सी। प्लीज राइट दिस डाउन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है आपको, आपको देखना है लिगेंड, लिगेंड में आपको देखना है विच इज हैविंग स्ट्रॉन्गर फील्ड, विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, वो देखना है आपको, जिसके पास ज्यादा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, दैट इज गोइंग टू हैव व्हाट, अ हायर एनर्जी, इट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एट हायर एनर्जी। चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू डन। राइट, नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ्स, आपको पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेलो of absorption in the visible region for the complex CO3 positive S, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे CO3 पॉजिटिव में है, सो यू डोंट हैव टू कंसीडर द मेटल एंड द चार्ज, आपको सिर्फ क्या कंपेयर करना, लिगेंड कंपेयर करना। चलिए, लिगेंड कंपेयर करके बताइए which is the correct increasing order of wavelength, that means decreasing order of del O. I will give you guys 2 minutes
Okay, we have got one answer. Yes, Saf, I think that is correct. Yes, Farhat, I think that is correct. देखिए भाई ना, बाकी लोग आंसर ही नहीं करते हैं, कैसे समझ में आ रहा है? हम कैसे समझे? अनीफा को आ रहा है, नहीं आ रहा, अक्सा को आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस आइलैंड करेक्ट, वेरी गुड। अक्सा, एम आई ऑडिबल? ठीक है, वेरी गुड अक्सा, थैंक यू वेरी मच। वेटिंग फॉर हनीफा एंड हिबा। हनीफा, आर यू स्टक या फिर आ रहा है आपको? I'm doing it. डूइंग इट। हिबा, व्हाट? हिबा ने तो आंसर ही नहीं किया आज, मेरे को लगता है। हिबा ने आंसर किया है कुछ आज? ना, इट सीम्स हिबा ने तो आंसर ही नहीं किया आज। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेलो में पानी है आपके पास, EN है एंड NH3 है। सो ऑब्वियसली स्पीकिंग H2 हैज द लीस्ट वन। उसके बाद कौन आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना? तो सबसे ज्यादा H2O होगा वेवलेंथ में। उसके बाद आपके पास होगा NH3। उसके बाद होगा आपके पास EN। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, हनीफा करेक्ट, वेरी गुड। चलिए इसको बताइए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स फॉर दिस। ये बोर्ड्स लेवल का सवाल है बिल्कुल। ओके हनीफा, हनीफा एक बार आपने ऑप्शन तो लिख दिया, एक बार उसको कंफर्म कीजिए थोड़ा सा करके। लुक एट द चार्ज ऑन निकल, देन लुक एट द लिगेंड। यस, हनीफा प्लीज एक बार फिर से देखिए, आप चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए। चलिए लेट अस सी। यस, हनीफा एंड फहद करेक्ट, वेरी गुड। सो निकल इन दिस केस इट इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को ध्यान रखिएगा। निकल इन जीरो, सो निकल हैज 4s2 3d8। ठीक है, अच्छा, निकल में यू हैव कार्बन एंड यू हैव 4। अच्छा, 4 में आपके पास देयर आर 2 डिफरेंट केस, यू कैन हैव आइदर sp3 और यू कैन हैव dsp2। Now, if you have sp3 or you have dsp2, in both the cases क्या चाहिए आपको? आपको s वाले सबशेल को फ्री करना है। That is why both of these electrons it will shift to the 3d8 and आपको क्या मिल जाएगा? 4s0 3d10 हो जाएगा। ठीक है, so you'll have 3d10। 3d10 में बोलने की जरूरत नहीं है, it is going to be all will be paired and s आपका यहाँ पे फ्री हो जाएगा। ठीक है, you will have s that is going to be free and then you will have the p3 orbitals 1 2 and 3। ठीक है, तो s कहां से ट्रांसफर हो जाएगा? 8 में। उसके बाद आपके पास 4 फ्री sp3। sp3 is tetrahedral and this d10 that means it is diamagnetic. In this case it is going to be what? Tetrahedral and diamagnetic।
ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में आपको इसको याद कर देना, इट विल बी टेट्राहेड्रल एंड डायमंड। Moving on, let us look at the cases in which we have Ml4. Now, when you have Ml4, उस केस में आपके पास from D0 to D7 you don't have to look, each and everything will be tetrahedral and it will be sp3. D10 में भी whatever complex you have, it will be sp3. Okay. Next case is when you are going to have, what? When you are going to have D8 or D9. D8 और D9 में आपके पास दो configuration हो सकते हैं. You can have sp3 which is going to give you tetrahedral geometry, or you can have dsp2 which is going to give you square planar geometry. Now, if you have any metal of 3D series with +2 oxidation state, please remember 3D series with +2 oxidation state, it will be tetrahedral and sp3 if the ligand is before H2O including H2O. ठीक है ना? There are two types of bracket. इस तरह के ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रैकेट। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रैकेट। और इस तरह के ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ब्रैकेट। ये मैथ से पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से 1 से लेके 10, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? 1 से लेके 10 तक, लेकिन 1 और 10 को एक्सक्लूड कर। If I write 1, 10 like this, then in this case it is what? From 1 to 10 including 1 and 10. All of you understood? ठीक है, तो before H2O including H2O, ठीक है ना? Before H2O and including H2O. If you have DSP2, if you have 3D metal with +2 oxidation state, but it is after H2O excluding H2O, है ना? आपने H2O को exclude किया हुआ। After H2O जो भी होंगे, all ligands will be what? All ligands will have DSP2. कोई भी ligand हो वाटर के बाद वो DSP2 शो करेगा, and all ligand of 3D series with +3 and +4, 4D and 5D सीरीज में +2 +3 +4 में सारे के सारे क्या शो करेंगे? DSP2 कॉन्फ़िगरेशन ही शो करेंगे। The only case that जहां पे आपको चेक करना पड़ेगा is when you have 3D and +2 और इलेक्ट्रॉन्स आपके पास D8 या D9। ठीक है, if D8 and D9 is present and the ligand is before H2O, then it is going to be sp3 tetrahedral. If it is after H2O, it is going to be DSP2 square planar. बाकी सारे केस में क्या होगा आपके पास? D8 और D9 कॉन्फ़िगरेशन में, if you have D8 or D9 configuration, then in the rest of all the cases it is going to be square planar. बाकी D0 से D7 में tetrahedral और D10 में भी tetrahedral होगा. So please write this down. This was for ML4 when you have 4 ligands, and then we will look at some question, and after that फिर कुछ miscellaneous topics हैं उनको करेंगे. Please write this down, guys. Oh my God. Assalamu alaikum, Mamuna. Can you hear me, Mamuna? वालेकुम सलाम सर। बहुत ही ज्यादा लेट हैं आप तो। हाँ, what happened? Is everything fine? यस सर। क्या सो गए थे आप? नो सर। So you forgot about the class. What happened? Sir, I was out, then I came home, so I got pretty late. Why were you out class के time? Sir, what's the recording? Okay, काफी आगे हो चुका है, हम तो बाकी पिछले का explain नहीं कर सकते. What's the recording? Almost all the class is done. चलिए, Okay. try this one, guys.
यस सर, करेक्ट, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी, ठीक है ना, डी में देखिए क्या है। उसके बाद देखिए आप +2 है या क्या है, ठीक है ना। सो निकल हियर इट इज +2, तो आप लोग देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं डी में। +2 डी में कितना होगा, शक्ति विक्रम डी 8 होगा ना, एंड देन यू हैव +2, और वो भी किसका है, 3D सीरीज का है। और उसके बाद देखिए लिगेंड, लिगेंड इज बिफोर H2 और आफ्टर H2। अगर बिफोर H2 है तो sp3 होगा, अगर आफ्टर H2 है तो dsp2 होगा, सिंपल। यस मुनीफा, करेक्ट, वेरी गुड। यस गाइस, प्लीज अदर प्लीज आंसर कीजिए, बहुत ही आसान हो गया अब तो। निकल इज D8 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड बस आपको देखना है CN क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो CN की तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लास्ट में आता है ना, इट विल बी ऑब्वियसली आफ्टर H2O, इट विल बी व्हाट, dsp2। शुड नॉट टेक दिस मच टाइम गाइस, ठीक है। जब हमने एक्सप्लेन इसको कर ही दिया है, अगर हम ये नहीं एक्सप्लेन करते तो शायद आपको टाइम लगता, बट आई हैव सिंस एक्सप्लेन दिस, शुड नॉट टेक सो मच टाइम। निकल इज D8 ओनली ना, शक्ति विक्रमन फे को नी 27 28, हाँ ठीक है। चलिए ट्राई दिस वन, calculate the spin only magnetic moment of Cr2 plus ion. You will first of all calculate the number of unpaired electrons, ठीक है। Cr2 plus सिर्फ और सिर्फ Cr2 plus, कोई यहाँ पे you don't have any ligand, ठीक है। तो all the electrons Cr2 plus में जो भी होंगे उसको आप लोग आराम से पहले मतलब पेयर वेयर मत कीजिएगा ऐसे, जब जरूरत नहीं है तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कीजिएगा। Cr2 plus आयन का लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, डोंट लुक एट वेदर पेयरिंग विल टेक प्लेस और नॉट टेक प्लेस, है ना, सिंपल केस लिखना बिल्कुल आपको। एंड आई विल टेल यू द फॉर्मूला, म्यू इट इज इक्वल टू, आई होप बहुत सारे लोगों को पता होगा, रूट अंडर n into n plus 2. What is n? N is the number of unpaired electrons. So giving you guys 1 minute. Yes, Sam, very good, correct. Yes, Hanifa, very good, correct. No, Alan wrong, Farhat wrong. चलिए प्लीज सी हियर, फरहत कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? Cr2 पॉजिटिव में हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? यस फरहत, कैन यू प्लीज आंसर क्विकली, टाइम नहीं लेते ना इतना, 6 घंटे क्लास में आप लोग इतना, जी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास? यस फरहत, टेल मी। 4. 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, ठीक है ना। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आना चाहिए, 4s0 3d4 आ रहा होगा सबके पास, राइट, Cr2 प्लस में। नाउ what we have, mu is equal to n is equal to what, how much, 4 into 4 plus 2 is equal to 6, 6 का रूट कितना हो जाएगा, 24, 24 का रूट will be approximately equal to 5, yes or no, please tell me guys, बात सही है? 25 अगर होता, if it was 25 then it would have been equal to 5, but since it is what, root 24, it will be approximately near, very much near to 5, right, इसका square root. So what is near to 5? This is near to 5, this is near to 6, this is near to 3, this is near to 4. ठीक है, तो what is the correct option here?
A is the correct option, 4.90. ठीक है, got it guys? Yes or no, please tell me. Alan Yes, and sir. Farhad, Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया? ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. Try this. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ऑप्शन एंड सी. आप ABCD में से किसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा आपको. ठीक है, तो लेट अस सी. अगर आपने A को देखा तो 4 और 4 एंड 2 एंड 1. ठीक है, तो यानी 2 ऑप्शन में मिल सकता है. 1 2 4 3 आप देख रहे हैं. अगर आपने B ऑप्शन को सही देख लिया so you will get one of the options. तो सिर्फ और सिर्फ B को देखिए. You don't have to look at anything else. Look at the B option. आपने B ऑप्शन का अगर सही देख दिया, if you got the correct answer, तो बस वही टिक करना पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं देखना पड़ेगा. सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 को देखना पड़ेगा, 1 या 2 से ही काम बन जाता है. ठीक है, सो लुक एट B. FeH2O whole 6 3 positive. And I'm going to give you 2 minutes for this. 2 minutes, 1 minute is enough for this. H2A is a weak field ligand. ओहो, कंफ्लिक्ट आ रहा है. फरहत फिर से देखिए आप. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फरहत, टेल मी. यस फरहत, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स H2 में? FeH2O6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Fe3 plus has how many electrons? Tell me. हाँ फरहत आप बताएं. How many electrons in Fe3 positive? ओ इतना टाइम लगेगा. Fe होता है 4s2 3d5. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से. सॉरी FeH2 3d6 होता है ना, सॉरी. So you'll have 4s0 3d5. ठीक है, तो 5 into 5 plus 2 7 का रूट अंदर 35. तो 35 क्या हम बोल सकते हैं? इट इज अप्रोक्सीमेटली वेरी मच नियर टू व्हाट? रूट अंदर 36. और रूट 36 क्या होगा? 6 हो जाएगा. सो विच वन ऑफ देम इज नियर टू 6? तो बी का होगा 1. बी का 1 ए ऑप्शन. फरहत समझ में आ रहा है क्या? मिस्टेक कैसे हो जा रहा है आपसे? यू हैव रूट बी. यस फरहत टेल मी. I don't know, sir. 5 इलेक्ट्रॉन आए थे आपके पास. Yes, sir. यू गॉट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो 7 5 से 35 किया आपने. Yes, ओहो, sir. समझ गए. ओहो, आपको लगा दिस इज CFSE. हाँ, आपको क्या Yes, लगा? sir. Yes, ओह sir. ठीक, हड़बड़ में हो गया. ठीक है, नो. अच्छा समझ गया. चलिए सी है मेटल कार्बोनिल्स एंड सम अदर टॉपिक्स. उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है एंड देन वी हैव ट्रांस इफेक्ट. देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और ट्रांस इफेक्ट बहुत रेयर केस में पूछा गया था व्हेन यू हैड सेकंड फेज ऑफ नीट 2 फेज में उस बार लिया गया था, तब उन्होंने बहुत ये जॉन टेलर इफेक्ट और ये दोनों ट्रांस इफेक्ट आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा इन दोनों सवालों को और यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट का जो सीरीज है उसको. ठीक है, इल्ला माशाल्लाह आपको याद रह गया. अगर सवाल आ गया तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी. लेट अस लुक एट दिस ऑप्शन क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, assertion and reason. Assertion says that a metal carbon bond in metal carbonyls possess both sigma and pi character. ये बिल्कुल आपके बोर्ड्स के लेवल का सवाल है. ठीक है, the ligand to metal bond is pi. ligand metal के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है? pi बॉन्ड बना रहा है. and metal to ligand bond is a sigma bond. अब ये बताइए कितना सही है नहीं सही है? assertion and reason. देखिए दोस्तों रिमेंबर, अगर याद नहीं होगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कुछ नहीं किया जा सकता. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. दोनों के दोनों टाइप के बॉन्ड्स होते हैं. पाई भी होता है, सिग्मा कैरेक्टर भी होता है, पाई कैरेक्टर भी होता है. बट द रीजन स्टेटमेंट दिस इज फॉल्स.
जो बॉन्ड होता है इसको प्लीज बना लीजिएगा। दिस इज मेटल डी ऑर्बिटल, और उसके बाद क्या होता है आपका कार्बोनिल का, एक तो मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड होगा दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। देन दी फिल्ड मेटल ऑर्बिटल, फिल्ड वाला जो है वो क्या करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालता है, एंड दैट इज वाया पाई। वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कहां से कहां है, कार्बोनिल से मेटल, और पाई बॉन्ड कहां है, मेटल टू कार्बोनिल। दिस इज मेटल टू लिगेंड, और ये वाला जो बॉन्ड आ रहा है आपका, दिस इज लिगेंड टू मेटल, ठीक है, दिस इज लिगेंड टू मेटल। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, assertion is correct but reason is a false statement, वो statement ही गलत है। चलिए, moving on to John Taylor distortion. John Taylor distortion, it says that if you have a non-linear यानी कि लीनियर ज्योमेट्री नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट्स, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट्स, मल्टीपल स्टेट है, T2G भी है, EG भी, देन दिस विल बी अनस्टेबल, ठीक है, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होता है। दैट इज व्हाई दे विल लोअर देयर सिमेट्री व्हिच विल रिमूव द डीजेनरेसी एंड गिव्स स्टेबिलिटी। बेसिकली क्या मतलब होता है इसका, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है जहां पे EG में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, T2G में आपके पास इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ प्लीज सी, आई हैव टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, आई हैव टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स EG एंड T2G। EG में क्या क्या होता है, dz² होता है, और क्या होता है, dx² माइनस y² होता है। नाउ प्लीज सी हियर वेरी, अगर ये इलेक्ट्रॉन dz² में हुआ, then it will be repelling the repels ligand on z axis। ये क्या करेगा, z axis के लिगेंड को रिपेल करेगा, और z axis क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। z axis वाला जो बॉन्ड है तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसको बोलते हैं z out, है ना। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में दो तरह के होते हैं, z in एंड z out। सो व्हेन यू हैव द इलेक्ट्रॉन इन द z² तब क्या होगा, z out हो जाएगा। बट इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन dx² माइनस y², एक ही इलेक्ट्रॉन अगर इस वहां पे प्रेजेंट होगा, then what it is going to do, it is going to repel x and y, x and y को रिपेल करेगा तो क्या होगा, z वाला नीचे अंदर आ जाएगा, that is going to give you zn, ठीक है। so here we have two different types of scenarios present. If you are elongating the ligand, if you are elongating the bond which is in the z axis, that means symmetry is breaking, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अगर आपके पास dz² में हुआ तो क्या होगा, लिगेंड का जो बॉन्ड लेंथ है that will increase, and that is the distortion that is happening. अच्छा, डिस्टॉर्शन कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, इफ यू हैव EG एंड T2G, अगर EG और T2G दोनों के दोनों क्या हो, हाफ फिल्ड हो, या फिर दोनों के दोनों फुली फिल्ड हो, या फिर एक हाफ फिल्ड हो और एक फुली फिल्ड हो, ठीक है। सो देयर आर वेरी फ्यू केसेस जहां पे JTD एब्सेंट होता है। व्हाट आर द केसेस इन विच JTD इज एब्सेंट, D3 का केस देख लें। सो इन D3 whether you have strong field or weak field, only the T2G level will be filled। T2G में कितने हमारे पास है, it is half filled, and EG is what, completely incomplete, है। EG के बारे में बात ही नहीं करेंगे। Let us look at the next case, that is D5। In weak field ligand, D5 will be having this type of configuration जहाँ पे pairing नहीं होगी। Now in this case both of them are what, half filled, that is why also JTD will be absent। Next case is D6 of strong field ligand। In strong field ligand, since the pairing is going to take place, you will have 1 2 3 4 5 and 6। Now in this case, as you can see, here we don't have any unpaired electron। So if you are going to shift this electron here or you shift this electron here, then what is going to happen, कोई change यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट केस देखिए आप, जब आपके पास D8 होता है, स्ट्रॉन्ग फील हो चाहे वीक फील हो, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। और 10 दिस इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भेज दीजिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दीजिए, कोई चेंज नहीं होने वाला, दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे। दैट इज व्हाई डिस्टॉर्शन डज नॉट हैपन इन दिस केस। इन द लास्ट केसेस व्हेन यू हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन में भी आपके पास डिस्टॉर्शन नहीं होता है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन्स तब डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट JTD। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, D3 D5 D6 D8 and D10, ठीक है। These are the things where distortion does not happen। Please write this down, let me know once you're done। जल्दी से लिखिए इसको। आपको बस ये स्टेट याद करके रखने हैं।
चलिए, then everyone is on please tell me. 1 minute, sir. जल्दी लिखो. Okay, see, please see, this is not very important. ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है. इसको लिख लीजिए आप और इस बॉक्स को लिख लीजिए. डन. चलें. So what ठीक. is HF again? हाफ फिल्ड. एंड FF इज फुली फिल्ड. ठीक है, उन केसेस में एब्सेंट होगा. These are the cases in which it will be absent. ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, उतनी आपको जरूरत नहीं याद करने की, बस ये 5 याद करें. चलिए, मूविंग ऑन. John Taylor effect is not observed in high spin complexes of not observed. D7 में, D8 में, D4 में, D9 में. Obviously D8 के केस में it is not observed. हाँ, D8 वाला केस हमारे पास लिखा हुआ है, बाकी सब में it will be observed. Please write this question. Take a screenshot. Take a screenshot. Now moving on, trans effect. Trans effect होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. Trans effect क्या होता है, and then I will take this question. Trans effect, it basically is when you have square pyramidal type of structure and you have A, B, C and D. And let us suppose we have a new ligand, जिसको हम मान दे देते हैं E. ठीक है. Now whether E is going to replace A को, B को, C को या D को, ना किसी एक को वो रिप्लेस करेगा. Let us suppose it is going to replace D. अच्छा, जिसको भी वो रिप्लेस करेगा ना, if it is going to replace D, then the reactivity will depend on what is trans to D. अगर D को रिप्लेस करेगा तो आप देखिएगा कि D के ट्रांस में कौन है. अगर D के ट्रांस में आपके पास कोई ट्रांस इफेक्ट, अच्छा ट्रांस इफेक्ट शो करने वाला स्पीशीज मौजूद है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CN इन द प्लेस ऑफ A, तब E कैन इजीली रिप्लेस D. ठीक है, इसी का ही मतलब होता है, E विल इजीली रिप्लेस D. E को कौन बता रहा है रिप्लेस करना है, ट्रांस में, जो D के ट्रांस में, दैट मींस यू हैव टू लुक एट A. ठीक है, दिस इज बेसिकली ट्रांस इफेक्ट. The replacement of any ligand depends on the ligand that is on trans to it. तो उसके ट्रांस में, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं. ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करने वाला CN है, then you have CO, then NO and ET. This is the order. Please write this down. And there was a question in 2016. It was asked the correct increasing order of trans effect for the following species is. So as you can see, CN का सबसे ज्यादा होता है, and यहाँ पे आपके पास 2 केसेस है जहाँ पे CN ज्यादा है, B केस और B केस. इन दोनों में से कोई एक होने वाला है. CN के बाद यू हैव BR, या फिर BR तो बहुत नीचे आ रहा है, उससे पहले आपके पास PH आ जाएगा. व्हाट इज PH? PH इज C6H5, है ना, फेनाइल रिंग जो होता है. सो इन दैट केस D इज द करेक्ट, सॉरी नॉट D, रादर D इज द करेक्ट ऑप्शन. CN नेगेटिव, उसके बाद बेंजीन रिंग आएगा, उसके बाद BR नेगेटिव, एंड देन यू विल हैव NH3. दिस इज कंप्लीट, बहुत ही ज्यादा मिसलेनियस है, बहुत ही रेयर चांस है इसका आने का. अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा, नहीं हो रहा, तो फिर छोड़ के चले जाइएगा, जरूरी नहीं है. ठीक है, कभी नहीं आया है, सिर्फ 2016 में, एंड दैट टू व्हेन इट वाज फेज 2 एग्जामिनेशन, तब आया था. चलिए, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर डन गाइस. Done everyone? Okay. That's it for today. ठीक है, so in this Friday's test you will only have coordination compounds from my syllabus, और बाकी हसन सर आपको बता देंगे आगे के सिलेबस का. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा आप लोग करके आइएगा. ठीक है, और एक चीज हम आपको